Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing good, and today's video is about how to overcome self-harm behaviors. So today I will be teaching you how to overcome the self-harm behaviors, and my mother she suggested me to make a videos in Urdu as well. So today I will be speaking English and Urdu both. So yes, let's start. Techniques to overcome self-harm. What is self-harm? Let's learn about that. Self-harm is your way of dealing with unpleasant feelings and difficult situations. Self-harm क्या होता है? Self-harm एक एक तरीका होता है जिससे आप डील करते हैं अपने अनप्लेजेंट फीलिंग्स और जो मुश्किल हालात होते हैं उनको. If you're going to stop, you need to have alternative ways of coping so you can respond differently when you feel like cutting or hurting someone. So, जब आप अपने सेल्फ हार्म बिहेवियर को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके दूसरे तरीके भी होते हैं जिसको अपना कर आप वो जो इमोशंस और वो जो फीलिंग्स होती हैं उनको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं बजाय सेल्फ हार्म करने के. जैसे कि if you self harm to express pain and intense emotion, you could paint, draw or scribble on a big piece of paper with red ink or paint. Start journal in which to express your feelings. Compose poem to express what you feel. Write down negative feelings and rip the paper off. Listen to the music that expresses what you're feeling. So if you self-harm to express your intention and hurtful emotions, what you can do, you can paint and express your feelings, you can journal your feelings, you can compose a poem in which you can write about what you feel, you can write down the negative feelings, or you can listen to the music that expresses what you're feeling, or even you can compose any song that expresses your feeling. तो अगर आप सेल्फ हार्म करते हैं ताकि आप अपने दर्द और आपके जो दर्द भरे इमोशंस है उनको ज़ाहिर कर सके तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं और आप जर्नलाइज कर सकते हैं जो भी आप फील कर रहे हैं. आप पोएम बना सकते हैं जिसमें जो भी आप फील करें वो आप बोले. आप अपनी नेगेटिव जो अनहेल्पफुल फीलिंग्स होती हैं उनको एक पेपर पे लिख के पेपर को फाड़ सकते हैं. उसके बाद आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं जिसमें आपके जो भी जज्बात और एहसासात होते हैं वो ज़ाहिर हो रहे हों. So if you, let's go on the second point. If you self-harm to calm and soothe yourself, you could take a bath or hot shower, pet or cuddle with the dog or cat, wrap yourself in a warm blanket, massage your neck, hands and feet, listening to calming music. Okay, so if you want to self-harm to calm yourself, you rather than self-harming, you can pet a dog or cuddle. You can wrap yourself in a warm blanket. You can massage your neck so you can calm yourself and soothe yourself. तो अगर आप सेल्फ हार्म करते हैं अपने अच्छा फील कराने के लिए और अपने आप को उन हर्टफुल इमोशन से दूर करने के लिए तो आप अपने साथ एक जानवर रख सकते हैं. आप अपने आप को ब्लैंकेट में रैप कर सकते हैं ताकि आपको थोड़े से गरमाइश महसूस हो. आप अपने को हाथ को पैर को मसाज कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी और रिलैक्सिंग फीलिंग आए. आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं. और मुझे उर्दू बोलने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है चेंज करने में, लेकिन कोई बात नहीं, पहली दफ़ा है तो लेट्स गो अहेड. जी, अगर आप सेल्फ हार्म करते हैं क्योंकि आप डिस्कनेक्टेड और नम फील कर रहे हैं, मतलब कि आपको किसी मसले की वजह से इमोशंस और फीलिंग्स महसूस नहीं हो रहे और उस वजह से आप सेल्फ हार्म कर रहे हैं, तो आप सेल्फ हार्म करने की बजाय क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं.
आप शावर ले सकते हैं ठंडे पानी के साथ। आप आइस क्यूब अपने हाथ पे रख सकते हैं ताकि आपको आइस क्यूब की ठंडक महसूस हो और आपको उसके सेंसेशन महसूस हो अपने हाथ पे। आप कोई च्युइंगम खा सकते हैं, कोई चॉकलेट खा सकते हैं जिससे आपको टेस्ट से सेंसेशन महसूस हो। अच्छा, तो अगर आप सेल्फ हार्म इसलिए करते हैं कि आपको गुस्सा आया हुआ है, और जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है, और उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए अगर आप सेल्फ हार्म करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी हेल्दी वे में डिस्चार्ज हो जाए। आप कुशन ले सकते हैं, उसको पंच कर सकते हैं। आप कोई स्ट्रेस बॉल ले सकते हैं, उसको स्क्वीज कर सकते हैं। आप कोई शीट्स पेपर वगैरह जो काम के नहीं हैं उनको फाड़ सकते हैं, और आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले कर सकते हैं ताकि आपकी जो एनर्जी होती है गुस्से में वो हेल्दी वे में रिलीज हो जाए बजाय सेल्फ हार्म के। So, yes, if you want to self harm because you're feeling disconnected or numb or emotionless, or you don't feel any sensations, so what you can do, you can call a friend, you can take a shower, you can hold an ice cube in your hand so you can feel the sensation, you can chew a bubble gum or you can taste a chocolate. And if you do self harm to release your tension or vent your anger, you could exercise, you could punch a cushion, you could squeeze a stress ball, you could just tear some papers up that are useless so that the energy which is inside you gets released in a help rather than going for the self-harm behaviors. So yes, let's move ahead. So let's throw some light on the substitute for the cutting sensation. So what you can do is you can use a red marker pen to draw on your skin where you might usually cut so that you get a sensation in this way. You can rub an ice cube over your skin where you might usually cut to get the same sensation. You can place a rubber band on your wrist, arm, or leg and snap that instead of cutting. So when you do these things, you will get a same kind of sensation which a person gets when they have urge to cut. अच्छा जी, तो जब इंसान को कटिंग की अर्ज पैदा होती है तो और कटिंग करने से अपने आप अपने हाथ को कट करने से जो सेंसेशन फील होता है उसके हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट भी हैं, और उसके बजाय हम कोई दूसरे काम भी कर सकते हैं जिससे उनको वो सेंसेशन फील हो सकती है। जैसे कि आप एक रेड मार्कर ले सकते हैं, उसे अपने हाथ पर ड्रॉ कर सकते हैं उसी जगह पे जहां आप कट करने की अर्ज रखते हैं। उसके अलावा आप आइस क्यूब ले सकते हैं और अपनी उसी जगह पे आप उसको रब कर सकते हैं जहां आप कट करने की अर्ज रखते हैं अपने हाथ पे। और आप एक रबर बैंड भी ले सकते हैं, उसको अपने हाथ पे उसी जगह पर बांध कर आप स्नैप कर सकते हैं ताकि आपको वही सेंसेशन फील हो। So yes, let's move. Let's talk about emotional support from friends and loved ones when you have urge to self-harm. So when you have a urge to self-harm, you can approach your friends and loved ones to seek help. You can tell them, I feel like cutting, but I don't want to. Will you keep me company so I can stay safe? I have got, or maybe you can say, I have got a lot of my mind and it's hard to cope. Could I talk to you about how I am feeling? Or you can say, like, I'm trying to stop self harming and I could use some support. Can you come over? So, in this way, you can ask help from your friends and loved ones to overcome the self harm behaviors. अच्छा जी, तो जब आपको सेल्फ हार्म की अर्ज होती है तो आप अपने फ्रेंड्स और लव वन से सपोर्ट ले सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि मैं मुझे अभी अर्ज आ रही है कटिंग की, या मुझे अर्ज आ रही है सेल्फ हार्म की, तो आप हमारे घर आ सकते हैं मुझे कंपनी देने के लिए।
और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अभी सेफ़ नहीं फ़ील कर रहा, तो आप हमारे घर आ सकते हैं हमें कंपनी देने के लिए। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सारी हर्टफुल बातें हैं, मैं कोप नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप आ सकते हैं ताकि मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। So yes, let's move ahead. About the consequences of cutting and self harm. तो जब आप सेल्फ हार्म करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है? The relief that comes from cutting or self harm is only temporary and creates far more problem than it solves. सेल्फ हार्म जब एक इंसान करता है उसके जो consequences होते हैं या उसकी जो रिलीफ होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे निकल आती हैं। जैसे कि relief from cutting or self harm is short lived and is quickly followed by other feelings like shame and guilt. Meanwhile, it keeps you from learning more effective strategies for feeling better. सेल्फ हार्म जो होता है ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं होता आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके बाद आपको ये जो सेल्फ हार्म होता है आपके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं जैसे कि शेम और गिल्ट ये आपके अंदर पैदा कर देती हैं। Keeping the secret of self harm is difficult and lonely. Maybe you feel ashamed, or maybe you just think that no one would understand. But hiding who you are and what you feel is a heavy burden. Ultimately, the secrecy and the guilt affect your relationship with friends and family and how you feel about yourself. तो जब कोई इंसान सेल्फ हार्म करता है तो ये जो सीक्रेट होता है ये अपने तक रखना बहुत मुश्किल होता है, और जब आप ये सीक्रेट किसी से शेयर करते हैं तो आपको एक किस्म की शर्मिंदगी महसूस होती है। Let's go on the third point. You can hurt yourself badly even if you don't mean to. It's easy to end up with an infected wounds or misjudge the depth of the cut, especially if you are also using a drug or alcohol. आप अपने आप को बुरी तरीके से हर्ट कर सकते हैं, ऑल्दो आपका इंटेंशन ना हो बुरी तरीके से हर्ट करने का, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बुरी तरीके से हर्ट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको कोई बहुत बुरा गहरा ज़ख़म मिल सकता है जिसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत मुश्किल हो शायद। तो ये भी एक कंसिक्वेंसेस है सेल्फ हार्म का। You are at risk for bigger problem down the line. If you don't learn other ways to deal with the emotion pain, you increase your risk of major depression, drug and alcohol addiction and suicide. तो अगर हर बार आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या कोई सेंस ऑफ टेम्परेरी रिलीफ हासिल करने के लिए सेल्फ हार्म करते हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क में हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और अगर आप ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ कर रहे हो और तो ये उसके लिए और भी ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप हर दफ़ा सेल्फ हार्म को एज यूज़ करते हैं एज अ कोपिंग मैकेनिज्म टू ओवरकम to overcome a feeling of dissociation, to overcome the feeling of hurtful emotions, so it can lead to a bigger problems. Self harm can become addictive. It may start off as an impulse or something you do to feel more in control, but soon it feels like cutting or self harm is controlling you. It often turns into compulsive behavior that seems impossible to stop. तो सेल्फ हार्म जो होता है इसकी आदत भी इंसान को लग सकती है। ये शुरू होता है एक इम्पल्स से, और ये फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो सेल्फ हार्म बिहेवियर होता है ये आपको कंट्रोल कर रहा होता है, और कभी कभार ये बिहेवियर कंपल्सिव हो जाता है, मतलब कि रिपीट ये बिहेवियर बार बार करते हैं, रिपीटेडली आप ये बिहेवियर करते हैं और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। So the bottom line is the cutting and self-harm won't help you with the issues that made you want to hurt yourself in the first place, no matter how lonely, worthless, or trapped you may be feeling now. There are many other more effective ways to overcome the underlying issues that drive you self-harm. तो नतीजा ये है कि सेल्फ हार्म आपकी किसी भी किस्म की आपकी हेल्प नहीं करता,
इंस्टेड ये बहुत नुकसानदेह काम है और इसके कंसिक्वेंसेस भी बहुत नुकसानदेह हैं, जैसे आपको पता लग गए हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस चीज़ की वजह से आप सेल्फ हार्म कर रहे हो उसके उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सके। सो यस, लेट्स मूव to overcome self-harm. DBT skills to overcome self-harm. So let's learn about the DBT skill. There's one skill that's called urge to no, the skill is called urge surfing, and the people who have urge to self-harm, like they have urge to cut themselves, what they can do is they can do urge surfing at that time. Okay, what I mean by urge surfing is, for example, right now you have an urge to get up and cut yourself. So at that time, just sit down, take a deep breath, and after taking a deep breath, tell to yourself that it is just an urge and it will pass by. Take a deep breath, and soon, within few minutes, you will see that your urge it has served. So it has gone. It's just an urge for few seconds or few minutes, and after you do the deep breathing exercise and you make yourself understand that this is just the urge right now I am having, and it will pass by the time, and this thing it works. The urge it passes off. The second one is there are some patients who overdose to die. So what they can do is they can keep the minimum amount of pills, and they can list the negative consequences with the pill bottles, like if you overdose and if you self-harm what will happen, as you learned in the previous slides. And they can keep the minimal amount of pills in their home. Also, they can, when they have urge to self-harm and these suicidal ideations crosses their mind, they can use the grounding technique. What I mean by grounding technique is bringing your attention to the present senses. That's called 5 4 3 2 1 technique, using a sensation of eye, using a sensation of nose, using a sensation of ears, using a sensation of touch, and using a sensation of taste. So you can also Google this grounding technique to learn about it. It's very easy. It's like noticing five things around you and paying the close attention to them, touching the four things around you and paying the close attention to its sensation, how they feel like, and what is the texture of the cloth. What was the third one? Hearing the three sounds around you and uh, paying the close attention to those sounds, like ticking of the clock, the sound of the wind, and the birds chirping. Then two things you can smell, maybe a flower, maybe a scent, and bringing attention to that sensation of smell. One thing you can taste. So this grounding technique, it helps for many things. When you overthink about something, when you have urge to self-harm, and when you're ruminating the things, so you can use this grounding technique to bring you in the ground and to overcome these problems. The fourth one is to review the negative consequences of self-harm. And when you think about, if I do the self-harm, these are the negative consequences I will get, you will most probably not go toward the self-harming behaviors. तो लेट तो जो डीबीटी स्किल्स होती हैं वो कैसे आपको हेल्प करती हैं सेल्फ हार्म से बचने के लिए। जैसे कि आपके अंदर एक अर्ज पैदा हो रही है सेल्फ हार्म की, तो आप अर्ज सर्फिंग स्किल यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आप से कह सकते हैं कि ये सिर्फ अर्ज मेरे अंदर अभी आ रही है और ये चली जाएगी। उस वक्त आपने डीप ब्रीथिंग करनी है और आप कुछ सेकंड्स में देखेंगे कि आपके अंदर वो जो अर्ज है वो जा चुकी होगी, जब आप आराम से बैठ के अपने आप के साथ डीप ब्रीथिंग करेंगे और अपने आप से कहेंगे कि ये सिर्फ एक अर्ज है मेरे अंदर और ये चली जाएगी वक्त के साथ। सेकेंड, ओवरडोसिंग टू डाई। सॉरी, ओ जब आप ओवरडोज करते हैं अपने अपनी ज़िंदगी लेने के लिए, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, अपने घर में इतनी ही तादाद की मेडिसिन्स रखें जिनसे आपको लगता है कि सेफ़ हैं, आप उनके साथ ओवरडोज नहीं कर सकते।
और उस उन मेडिसिन्स के साथ आप एक पेपर रखें जिसमें आपने नेगेटिव consequences लिखने हैं कि अगर आप ओवरडोज करेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान आपको होंगे। चौथी है ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक में क्या होता है कि आप अपने जो सेंसेशंस होते हैं उनको ग्राउंड में ले आते हैं। आप अपने सेंसेशंस जैसे आँखों को, नोज़ को, टेस्ट को, टच को यूज़ करते हैं ताकि आपके अंदर जो अर्ज पैदा होती है सेल्फ हार्म की वो चली जाए और आपकी जो अटेंशन है वो इन सेंसेशंस की तरफ आ जाए और आप इस अर्ज से निकल पाए। और चौथी है रिव्यू द नेगेटिव consequences ऑफ सेल्फ हार्म। आप एक पेपर पे लिख लें और आप बेशक कोपिंग कार्ड्स बना लें कि अगर मैं सेल्फ हार्म करता हूँ तो ये नुकसानात मुझे होंगे और कोपिंग कार्ड्स अपने घर पे कहीं भी चिपका लें। So I hope you find my videos informative and I wish you best of luck for your life and I'll be posting more videos. And yes, that is the session. There's not sorry, not the session. That was the presentation. And yes, take care. Bye bye. Masalam.